Assam is voting for the third and final phase of assembly elections today. Close to 80 lakh voters are expected to exercise their franchise in as many as 40 constituencies spread across 12 districts. 4 assembly seats in Guwahati, besides 8 in BTR, and the constituencies in Lower Assam are going to polls in this phase. As we speak, polling is just underway. 337 candidates are in fray for the 40 seats, including 25 female candidates. In the third phase of the poll, several prominent candidates are in the fray, including, of course, NEDA convener and Assam Minister Himanta Biswa Sharma, State BJP President Ranjit Kumar Das, Ministers Siddhartha Bhattacharya, Chandra Mohan Patwari, Phoni Bhushan Chaudhary, Pramila Rani Brahma, Chandan Brahma. Big names are there in the fray in this phase as well. A lot will be at stake for the BJP and Mahajot in BTR and Lower Assam, while all eyes will also be on the 4 seats in Guwahati. Yes, finally polls in Guwahati. People are already thronging polling stations in Jalukbari, Guwahati East and West, and of course Dispur. Well, if we look at BTR, we have the seats of Gosaigao, Kokrajhar West, Kokrajhar East, Sidli, Bijni, Tamulpur, Boroma and Chapaguri going to polls, and the contest in these 8 seats will be keenly watched. Then we have the Lower Assam constituencies, which have seen fierce fight last time round between the BJP, Congress and the AIUDF. So all in all, viewers, a very interesting and crucial round of polling today. Last phase of polling, third and final phase of polling. Polling has been peaceful in Assam so far in the first and second phase, apart from stray incidents, and of course the turnout also has been good, close to 80% turnout in the second phase, similar figures in the first phase, and people expect, everybody expects turnout to be good in this phase as well. We will go straight to Joydeep Hazarika, who is joining us live from Kokrajhar to give the updates from there. We'll also be joined by Ranjit Rai from Dhubri, Vikram Sarkar and Ajit Jaiswal from Guwahati. But first we'll go to Joydeep Hazarika. Joydeep, how is the mood there? I can already see a sizable turnout, people queuing up already. Well, we can expect a high turnout today as well, Joydeep. Yes, definitely, Nabarun. A high turnout is what we are all looking forward to today. I am right now here at Haltugaon, and the venue right now is Gorang Government High School. This has been this is the polling station for the vicinity here. As you can see around me, quite a good number has actually turned up. I'll ask my camera person to pan around, and you can see people have already gathered here. It's a good turnout right at the very beginning, and even as I speak right now, voting has begun. Voting started sharp at 7, and the voting has begun. I'll ask my camera person to show around just to get a hang of the turnout. As you can see, it's a good turnout, and Haltugaon area, it is actually a little away from the Kokrajhar area. So Haltugaon, you see, it's kind of a mixed population here. You have Boros, you have Bengalis, Assamese, and other communities as well. So it's a good turnout. Definitely, it's quite encouraging for the start of the day. I would not be surprised if at the end of the day, the turnout of the voters turns out anything close to what we saw in the first and second phases. Obviously, we have come to this particular polling station mainly because UPPL candidate for Kokrajhar East, Lawrence Islari, is also here. He has arrived here to cast his vote. Even as I speak right now, I'd like to show our camera. I'd like to ask our camera person to follow me. He is inside right now, casting his vote. Yes, we arrived here, we chose this place as the first place as the first spot for our election coverage for the third phase in Kokrajhar, because Lawrence Islari is here. Lawrence Islari, we spoke to him a couple of days ago during the campaigning. He is the candidate for the Kokrajhar East constituency. He's also here. He has arrived here for an early voting. After this, obviously, we'll go and try to catch up with the other candidates in the area as well.
But as you can see, it's a good turnout, very good turnout. The weather is also good. It's a clear, sunny sky. And today, obviously, as we have talked earlier, Kokrajhar is obviously seeing the third phase of polling. Let me, in the meantime, try to get a hang of what the voters here feel. Let's try to talk to some of the voters here, and let's try to know what they have in their mind while they have gathered here to cast their votes. As you can see, there's a good amount of people. I have already shown you the visuals. Let's try to talk to some of the people here. Dada, vote diba aise aaj apuni kena laise ভাল লাগিছে এনে মানে হেৰি আপুনি ইয়াৰে ওচৰৰ বাসিন্দা হেৰি আপুনি ভোট দিব আহিছে আপুনি মানে কি মানে মানে এনেকুৱা মানে কি মানে অলপ মানে আশা আছে আপোনাৰ যে মানে এইবাৰ মানে পূৰণ হওক এই ভোট দিয়াৰ কাৰণে বুজিছে নট কথা কি ভাবিছে আপুনি ভোট দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে মানে আগতকৈ অলপ পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ আহিছে আৰু যেহেতু পৰিৱৰ্তনৰ মুখ দেখা পাম আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন আপুনি আশা কৰি আছে এতিয়া হেৰি ইয়াতে অলৰেডি BTC ইলেকশ্যনৰ পিছত এইটো দ্বিতীয় এটা ইলেকশ্যন হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে কম সময়তে বেছি সময় নাই দুৰ মাজতে এতিয়া হেৰি আপোনাৰ এই অঞ্চলটোত এই এৰিয়াটোত আপুনি মানে কি এনেকুৱা মানে অলপ মানে মানে প্ৰগতি মানে চাব খোজে এনেকুৱা কি ইছ্যু আছে যোনটো আপুনি বিচাৰে যে মানে আগন্তুক দিনত মানে এইবোৰ এড্ৰেছ কৰা যাওক আগন্তুক দিনত যিবিলাক মানে ৰাজ্যৰ সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব সেইটো আশা আছে আমাৰ আৰু যেহেতু এই 2 মাহৰ 66 দিনত যিখিনি কাম কৰিলে আমাৰ আগৰ যিখন চৰকাৰ আছিল তাৰ হিচাপত বহুতখিনি আগবাঢ়িছে জয়দীপ ভাল লাগিছে যে পৰিৱৰ্তনৰ মুখ দেখিছোঁ লগতে পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ পাব্লিকে ঘৰে ঘৰে বুজি পাইছে ৰাইজে বুজি পাইছে জয়দীপ we will come back to you in a while সমস্যা মানে সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন নিশ্চয় ধন্যবাদ Joydeep, we will come back to you. Stay online. We'll come back to you in a while. We will now go to West Guwahati, where our correspondent Vikram Sarkar is on standby. Vikram, where are you exactly? And I can already see a sizable turnout there on the background. Vikram. Yes, Navrun, we are standing at West Guwahati's South Point School, and you can see the huge number of people has already gathered. Here, the fight is between BJP and AGP. Ranindra Nayan Kalita, who is the 3-time MLA from this constituency, West Guwahati, and again he is fighting from here, and he is going to contest with his contestant, if we say, is Meera Thakur, who was ex-Mahila BJP president, now contesting from Congress party, and also AGP's Runa Lela. I'll ask my video journalist Manav Das to show you the huge turnout of people in this in the start of the morning at South Point School near Barshapara in the West Guwahati constituency. Navrun. Vikram, these are very encouraging visuals. Guwahati not known to have a high turnout. People in Guwahati don't come out in large numbers to vote usually, but what we are seeing here are very, very encouraging visuals. It's almost a full house there, if I may say. We probably can expect a big turnout if these are indications of things to come in the entire city. Yes, Navrum, if this is the start of the day, we can show this much of turnout, and we know that at this constituency and at Disput, the maximum turnout happens, and you can see the people are standing in a queue. Many more people are coming, waiting for their turn. They are waiting the polling station to get open, though the work is going on inside, the settings up is going on inside, but the people are waiting for their turn to cast their vote. And yes, it is being expected that the most turnout of people will be happening this time in this election. Navrun. Vikram, we will come back to you in a while. In the meantime, you can try and talk to a few people. We are coming back to you in a moment. We will also be joined by Ajit Jaiswal, who is on standby in Amingao. But before that, I would like to go to Joydeep again in Kokrajhar. Joydeep, security has also been another concern in the area in BTR, especially in the run-up to the polls with the recovery, seizure of arms. What are the security measures in place? I'm sure elaborate arrangements have been made. If you could give us an update on that, Joydeep. Yes, definitely, Nabrun. Elaborate security arrangements have been made. In Kokrajhar, over the last couple of days, we have seen an increased presence of security personnel in and around Kokrajhar. Obviously, most of the paramilitary forces and the police are concentrating
on rural areas. Now where we are standing, this is considered to be rather close to the Kokrajhar town. This is still at least 10 kilometers away from the main town of Kokrajhar, where we are right now. So definitely even here also that there is a visible presence of security personnel. But as we talked to the Deputy Commissioner of Kokrajhar yesterday, Mr. Bhaskar Phukan, he made it clear that even though security has been increased in almost every places in the district, considering the fact that the recent that certain news in recent times have not been very pleasant to begin with. But the thing is that the authorities and the security forces are concentrating more on interior areas or border areas, because that is where the most probability of any trouble happening takes place. Now, when I talk of interior areas, there are certain pockets which are in the interior, in the interior parts of the district, where the communication is not very good. Motorable roads is also not present in some cases. Many of the roads are in a dilapidated state, which we have personally found while traveling in the area over the last few days. And then on top of that, you have a vast amount of areas which are on the border of Bhutan. These areas are the most concerning ones. Most of the critical and sensitive polling booths are actually in those areas. And because these areas have a history of militancy and lawlessness, hence a lot of emphasis is being kept on the security aspect in certain parts. So yes, on top of that, obviously there is a very strong security presence around the strong room in Kokrajhar town. As we mentioned, it's going to be a 3-layer strong room. Since voting is now underway. Voting is scheduled to go on till 6 in the evening, and once that is over, these polling officials and all the polling teams will start coming into the strong room. That is when we will see a heightened security presence within Kokrajhar town in comparison to the rest of the day. So yes, security arrangements are quite up to the mark. We saw we saw how things were during the recent right. BTC elections, which happened not long ago in December. Joydeep, you also keep a track of Lawrence Islari if he has already cast his vote, and we'll try to get the first reactions from him. Be online, Joydeep. We will go to Ajit Jaiswal now. Ajit Jaiswal is in the prestigious Jalukbari constituency. Ajit, you are at the Amingaon High School polling center. And क्या है, कैसा ऑलरेडी साइजेबल टर्नआउट दिख रहा है मुझे बैकग्राउंड में, और हिमंत विश्व शर्मा भी यहाँ पे वोट कास्ट करने वाले हैं एज पर इंफॉर्मेशन. इज इट ट्रू, एंड व्हाट टाइम इज एक्सपेक्टेड टू कास्ट हिज वोट, और कैसा क्राउड बिल्डअप है, कितने लोग आए, कितनी तादाद में लोग आए अजीत अभी तक वोटिंग के लिए? जी नवरुण, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमीनगांव हाई स्कूल पोलिंग सेंटर में, और यहाँ पर जो हिमंत विश्व शर्मा है, जो जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हिमंत विश्व शर्मा, वो 7:30 बजे यहाँ अपने परिवार के साथ इसी मतदान केंद्र में मतदान करेंगे. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और यहाँ पर सुबह से ही आप जिधर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी कतारों में लोगों की लाइन लगी हुई है. लोग मतदान के लिए यहाँ पर तैयार हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ कतारों में लोग ही हैं. हम कुछ लोगों से भी बात करना चाहेंगे. आप कितने देर से यहाँ मौजूद हैं? सुबह 5 बजे से. सुबह 5 बजे से. हाँ. अभी यहाँ पर काफी लोग देखने को मिल रहा है, तो आप लोग सुबह ही आ गए? सुबह वोट देना जरूरी है ना. जी. और भी हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग जो हैं, पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं, जो अपना मताधिकार है उसे देने के लिए. और यहाँ पर जो हिमंत विश्व शर्मा है, जो जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, वो भी अपने परिवार के साथ इसी मतदान केंद्र में 7:30 बजे. अजीत हमें मिली खबर के अनुसार परिवार के साथ
अजीत, हमें मिली खबर के अनुसार 9, साढ़े 9 भी बज सकते हैं, बट जो है एक बहुत ही बड़ा टर्नआउट देखने को मिल रहा है ऑलरेडी अजीत। गुवाहाटी में हालांकि ऐसा कहा जाता है कि लोग जो है लार्ज नंबर्स में वोटिंग करने नहीं आते हैं। गुवाहाटी में वोटिंग परसेंटेज जो है यूजुअली उतना हाई जाता नहीं है, बट अभी हम थोड़ी देर पहले जो हमारे साथी हैं विक्रम सरकार, वो गुवाहाटी वेस्ट के एक पोलिंग स्टेशन में थे, वहाँ भी ऐसे ही भारी तादाद में लोग आए हुए थे। अभी आप आमीन गांव में हैं, वहाँ भी हमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। सो इस बार हम उम्मीद शायद कर सकते हैं कि गुवाहाटी में भी पोलिंग परसेंटेज शायद से रिकॉर्ड तोड़ हो। अजीत जी नवरून, जैसे कि लोग जो है अपना वोट देने को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, उन्हें अपने जो ये ड्यूटी है वो मालूम है, और कहीं ना कहीं जो गुवाहाटी के जो वोटर हैं वो ज़्यादातर कामकाजी लोग हैं, तो वो सुबह सुबह इसलिए आए हैं कि ताकि वो अपना जो वोट देकर वो अपने काम के लिए निकल सकें। इसीलिए यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर कतारों में लोग दिख रहे हैं। और सिर्फ इसी पोलिंग स्टेशन की नहीं, जो यहाँ पर हम आए थे तो हमने रास्ते में देखा कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ सुबह से ही, सुबह 6 बजे से ही लोगों। अजीत, मैं वापस आऊंगा आपके पास। फिलहाल आई एम बीइंग जॉइंड बाय रंजीत राय, आवर डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर फ्रॉम धुबरी। रंजीत, गुवाहाटी में भारी तादाद में लोग आए हैं वोट करने, कोकराझार में भी वही माहौल है, धुबरी के क्या हाल है रंजीत? जी हाँ, धुबरी में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में हूँ। यहाँ पे लोगों की संख्या अभी फ़िलहाल कम है और 6 बजे से मॉक वोटिंग भी हुई थी। मैं देवोजीत से कैमरा पर्सन देवोजीत से दिखाने का अनुरोध करूँगा यहाँ का माहौल। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूँकि ये टाउन इलाका है और यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सुबह के 7 बज चुके हैं और आप लोग वोटिंग के लिए आई है, क्या अनुभव है, क्या मन में चल रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हम तो अच्छा लग रहा है वोट देने के लिए, यही और कि वोट देना चाहिए, वोट देते हैं। क्या कहेंगी, अभी यहाँ पे लोगों की संख्या थोड़ी कम है, नहीं बढ़ेगी। सुबह सुबह आए तो किस तरह का उत्साह है आपके मन में? हर बार हम लोग सुबह में आते हैं और यहाँ पर जनसंख्या थोड़ा कम है, 1 नंबर वार्ड में थोड़ा कम है, इसलिए मैंने भीड़ कम है, बाद में भीड़ होगा। क्या आप पहली बार वोट कर रही हैं? नहीं मेरा जो पहली बार नहीं कर रही हूँ, बहुत बार किया है। मैं गुवाहाटी में ऐसे रहती हूँ, लेकिन मेरा इधर वोट है, मेरा होमलैंड है, होम टाउन है, सो मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए। आज सुबह आ गया क्योंकि थोड़ा भीड़ कम होता है और ये वार्ड में भी लोग माने पॉपुलेशन थोड़ा कम है तो कम ही होता है। रंजीत आप बने रहिए, हम वापस आएंगे आपके पास रंजीत।